સાથે ચર્ચામાં જોડાઈ રહ્યા છે કંપનીના CFO जगन्नाथ चक्रवर्ती। सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है शो पर। सबसे पहले सर जानना चाहेंगे, रिसेंट जो हेल्थ केयर मेजर IT के साथ एक आउटसोर्सिंग डील कंपनी की जो हुई है, तो साइज़ कैसे है सर और ड्यूरेशन ऑफ द डील आप कैसे शेयर करना चाहेंगे? So the deal is we have won this deal in June 2024. During the analyst call we have announced this deal. We were waiting for the customer approval for announcement, hence we did it in August, end of August. This deal is with a healthcare company. This is a 7-year deal. This is the second largest deal for Sonata. This deal consists of a major component of AI. We are implementing our AI platform into their customization and making it applicable to the customer project, so that this platform will be built by us for the next 2 years for customer with customization, and then they will run the business in this. We will run the business for 5 years for them and hand over the platform to them. This is a major investment from our side for the customer. We are also have rebadged some people. The rebadged people are joined by end of June. So with the on-site initial days, the on-site portion is more. Subsequently, in the next 2 to 3 quarters, the movement from the on-site to offshore will happen, and that will improve the margin. The AI investment is going to spread over the next 2 years. However, by end of the Q3, third quarter, that is the end of this financial year, we expect this project to improve the margin and come very, very close to the company average margin. This margin overall is very accretive for the company, but the initial days we have an investment both in on-site rebadging as well as for the AI platform, our Harmony.ai platform. We are customizing for the customer requirement and implementing in this project. जी सर, क्लियरली आपने यहाँ से एक डील के बारे में बताया, बट मार्जिन्स जो आप मेंशन कर रहे थे, तो कैसे मार्जिन्स और रेवेन्यू ऑप्टिक आप ये डील से आते हुआ दिख रहे हैं? ये मार्जिन वी आर एक्सपेक्टिंग, अभी हम लोग बता दिया, एक 2 क्वार्टर्स को हम लोग का प्रेशर होगा. वी आर गोइंग टू हैव अ सैलरी इंक्रीमेंट, दैट्स अ हेडविंड फॉर अस. तो वो प्रेशर होगा मार्जिन पे. We are expecting margin to improve by Q4 of this year, which is close to low 20s is what our expectation. But there is going to be a pressure for the next 2 quarters. Revenue growth पे अभी Q2 पे similar growth like Q1 वो expect कर रहे हैं हम लोग. Q3 Q4 पे कुछ improvement होगा. ये यूएस इलेक्शन की बात, फेड रेट की बात, तो मार्केट में अनसर्टेनिटी है अभी. लास्ट डील का वो भी इम्प्रूव होगा कमिंग डेज में. दैट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, एंड दिस विल हेल्प अस टू ग्रो लिटिल बेटर इन द सेकंड हाफ कंपेयर टू द फर्स्ट हाफ. होप सो. दैट इज व्हाट आवर होप इज. राइट सर. सर अभी रेवेन्यू के ऊपर अगर बात करें तो कंट्रीब्यूशन जानना चाहेंगे. हेल्थ केयर सेगमेंट में कैसा कंट्रीब्यूशन है और अभी रेवेन्यू के बेस पर एक ग्रोथ कैसा है, और हेल्थ केयर सेगमेंट अभी कैसे ग्रो कर रहा है? अभी हेल्थ केयर का अभी 16% है ओवरऑल रेवेन्यू को. वो जरूर इम्प्रूव होगा इधर से. वी वेर एट अराउंड 2-3% 1 year 1.5 years बैक. थैंक्स टू क्वांट वी हैव गॉट अ गुड कस्टमर base, and our healthcare is also started growing well. यही अभी healthcare का turnaround हो गया अभी turnaround healthcare में. वो high-tech वो TMT vertical वो भी अच्छा कर रहा है. BFS we are expecting this change to happen in 1 or 2 quarters. अभी retail में still softness है, कोई problem अभी. So we expect that after all these changes in the external environment, the uncertainties in deal closure will come down, and so Q3 and Q4 of this year should be better than Q1 and Q2 of this year.
जी, जगन्नाथ सर, जानना चाहेंगे अभी नॉर्थ अमेरिका में अभी करंटली आप कैसे देख रहे हैं, डील पाइपलाइन कैसी है और अभी आने वाले समय में कुछ बड़ी डील पाइपलाइन में है? Large deal pipeline is strong. And we mentioned that 49% of our pipeline is large deal का pipeline है, वो भी अच्छा है. So nothing, I cannot say anything is very, very close and then going to break and all those things. If there is something closer, we will update the market. At present, large deal pipeline looks good, but there are uncertainty and it's taking time to close it. The uncertainty continues. We expect that to improve by Q3 and Q4 of this year. राइट, तो सर डिसीजन मेकिंग के लिए क्या आपको यहाँ पे लग रहा है यूएस इलेक्शंस अभी इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक असर चल रहा है? बट नो, हो सकते हैं. यूएस इलेक्शन का अनसर्टेनिटीज अभी भी है. वो फेडरेट का भी एक इन्फ्लुएंस, वी एक्सपेक्ट दैट इन्फ्लुएंस आल्सो हैपन. वो इम्प्रूवमेंट, दैट्स व्हाट ऑल ऑफ अस आर एक्सपेक्टिंग. वी आर एक्सपेक्टिंग दैट मार्केट टू इम्प्रूव विद द यूएस इलेक्शन एंड फेडरेट चेंजेस. हम कुछ इम्प्रूवमेंट होगा इसमें. डेफिनेटली दैट इज ऑल आवर एक्सपेक्टेशन आल्सो. जी, तो सर इसके बारे में तो आपने बताया, तो आपको लग रहा है पोस्ट फेड डिसीजन और यूएस इलेक्शंस बिजनेस में कुछ आप पिकअप देख सकते हैं और क्लाइंट्स अभी ये पॉइंट के ऊपर क्या कह रहे हैं? ना, वो फेडरेट का डेफिनेट इन्फ्लुएंस है उसको बिजनेस पे. वो कैपेक्स स्पेंडिंग में कुछ लेंडिंग का कॉस्ट भी ज्यादा है, तो इसलिए तो लेंडिंग अभी कम है उधर. दूसरी बात क्या है, तो ये सब the sentiment improvement with the new government coming in, and that can also play an important role. The catch in this is the technology also has given us some uncertainty because of whether this is the final technology, is it going to change, we are going to have challenges. These customers are deferring the decision because of this, for the particularly for large deal. Smaller deals, definitely all, even 100K deal, AA is a component of it now. Without a AA component and no deal, no proposal goes to customer. We expect that with the election and Fed rate, customers will also get some more uncertainty and market decision making may improve, particularly with Fed rate cut. The cost of funds may come down and many of the businesses may be supported more. जी, और सर जैसे कंपनी का प्लान है यहाँ से टू अचीव $1.5 बिलियन एनुअल रेवेन्यू से नेक्स्ट कमिंग 5 years, तो ये कौन सा सेगमेंट्स आपको लग रहा है इसके लिए ज़्यादा ग्रोथ को ड्राइव करेगा और आने वाले समय में कुछ ज़्यादा एक्विजिशंस देखेंगे? अभी हम लोग का टीएमटी वर्टिकल जरूर सपोर्ट करते हैं वो ग्रोथ को. बीएफएस और हेल्थ केयर है हमारा फोकस एरिया. ये इन्वेस्ट एरिया है. 60% of IT spend happens in this area. We expect that this area will drive the growth in the vertical, will kind of drive the growth for us to reach 1.5 billion. In 1.5 billion, we have told 1 billion will come from India business. India business is on right track to reach that. International business पे ये दो इन्वेस्ट वर्टिकल हैं, हेल्थ केयर और बीएफएस, वो दोनों ड्राइव करते हैं और ये efficiently supported by TMT vertical, our largest customer. So we expect this combination to help us to grow faster. जी, और सर यूएस बीएफएस में हमने एक Q1 में पिकअप देखा था, तो Q2 में अभी डिमांड कैसे शेप अप होता देख रहे हैं आप? बीएफएस में इम्प्रूवमेंट है. देयर आर ग्रीन शूज. प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं अभी. लॉट ऑफ कस्टमर डिस्कशंस आर हैपनिंग. So we expect that BFS to improve in a quarter or so. So particularly after the Fed rate, there can be marked improvement, particularly in retail banking segment. We expect retail banking segment to do well. राइट सर, ओवरऑल सेकेंड हाफ की अगर बात करें तो यहाँ से आप एक पिकअप देख रहे हैं इन H2? रेवेन्यू का डील क्लोजर का अनसर्टेनिटी थोड़ा कम होगा, इसलिए डील भी रेवेन्यू भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं हम लोग अभी. Q3 and Q4 the improvement can happen, and that will actually be better than Q1 and Q2 of this year. Revenue growth can be better, decision making of customer will be better, large deal closure can be better. These are all the expectation for us.
जी, और जगन्नाथ सर लास्टली जानना चाहेंगे, जब लास्ट टाइम हमने बात की थी एआई के ऊपर काफ़ी आपने अपने व्यूज़ भी शेयर किए थे, अभी वो पाइपलाइन को लेकर क्या अपडेट है? The pipeline is growing very strong. AA का pipeline है. AA without AA there is no proposal going. The majorly what we were telling about AA was particularly the interest in customer to adopt the newer technology to achieve the result. We think that the pipeline is growing very strong, but large deal closure AA का deal में कुछ delay हो रहे हैं, customer का uncertainty है mind पे. So there is a delay in customer closing the AA deal. We expect this to improve in the next few quarters because the technology cycle का uncertainty है. वही problem create कर रहे हैं अभी. इसके बाद दो तीन 3-4 quarters के बाद improvement होगा उसमें. Definite improvement we can see. But next couple of years, the growth will be driven by AA, particularly GenAI will drive the growth. That is the expectation in the technology sector. जी, Jagannath sir, thank you for connecting, sir, and best wishes for coming quarters.